Hello everyone, welcome to चार्ट ऑफ द डे। माई सेल्फ राही मासूम रजा फ्रॉम ट्रेडर स्मिथ इंडिया। सो आज के चार्ट ऑफ द डे के लिए मैंने सेट किया दो स्टॉक। वन इज बंधन बैंक एंड द सेकंड वन इज निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, सो नाम इंडिया। सो लेट्स सी हाउ दिस टू चार्ट्स आर अपीयरिंग, टू स्टॉक्स आर अपीयरिंग ऑन द चार्ट। सो ये जो नाम बंधन बैंक का चार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रॉम 4 जनवरी ऑनवर्ड्स द स्टॉक हैज बीन एक्चुअली इन द करेक्शन फेज एंड ये ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स का ये करेक्शन चला यहाँ पर। और एक कच्चा खासा कंसोलिडेशन के बाद आज इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिला और स्टॉक हैज ओपन गैप अप। और गैप अप होने के साथ साथ ये जो 100 DMA, 200 DMA, इवन 50 and 21 DMA, सारा जो DMA है वो उसको एक साथ रिक्लेम किया है ये स्टॉक। और इसमें एक न्यूज़ भी आया है, लाइक आरबीआई हैज फाइनली अप्रूव्ड that Partha Pratim Sen Gupta will join as MD and CEO of the bank, which has acted actually positive for this stock. And the stock has also surged around 11% intraday. So it has it has actually bounced back, and the reclaim has taken place with above average volume and all 200 and 150 and 21 DMA all together. And it has also given a tail line breakout as well. So let's see how this stock is behaving। आने वाले दिनों में इसका क्या चाल रहता है स्टॉक का। और आज तो ये बहुत पॉजिटिव दिख रहा है और बाइंग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आया है इसमें। और इसका वॉल्यूम देख सकते हैं, अब एवरेज वॉल्यूम के साथ ये आज का जो आया है अगेन, तो जो कि एक अच्छा खासा पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। और जहाँ तक बात करें इसके बायर डिमांड की, तो बायर डिमांड इज B-। हालांकि ईपीएस स्ट्रेंथ इसका 31 है, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट। और इसका अगर हम लोग नंबर ऑफ फंड होल्डिंग की बात करें इन द लास्ट क्वार्टर, विच इज एक्चुअली डिक्रीज टू 6.43%। So this was about the Bandhan Bank. So the next stock is Nippon Life India Asset Management. So Nippon Life India Asset Management is trading in the bullish trend only. There is no weakness so far. हाँ, थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आया है यहाँ पर ऑलमोस्ट एक 22 अगस्त से बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर जो 739 का जो यहाँ पर जो बनाया था हाई यहाँ ऑन 22 अगस्त। उसके बाद एक देर वाज एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड में बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको स्टॉक को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, बट स्टॉक हैज अगेन इट गॉट बेस हियर एंड फ्रॉम द पास्ट 4 days एक्चुअली इट वाज ट्रेडिंग नियर इट्स सपोर्ट एरिया, ये जो आप लोग देख सकते हैं 4 दिनों का जो यहाँ पर है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में द स्टॉक हैज एक्चुअली रिक्लेम्ड इट्स 100 DMA, 50 DMA, 21 DMA साइमल्टेनियसली, and that also with above average volume, which is actually positive sign। Or if we'll talk about its EPS strength, then its EPS strength is 89 and the buyer demand is B। So, and if we look at the number of funds holding in the last quarter, there has been increment in that, and that is around 11.90%। So that was about chart of the day for those two stocks। So milte hain next day with another stocks and another chart। So thank you so much for watching the video।